Hello everyone. This is the first video of the subject Advanced Engineering Mathematics, and this video is basically for GTU students, and they can also be referred by other state universities by just checking up your syllabus with that of GTU. Whatever things that are common, you can refer, and the things which are not covered, you can look up from books. So let us start with the subject of Advanced Engineering Mathematics, and this is the first video. And one thing I would like to tell is these videos will be in English and Hindi mix, as many of the students in the various state universities, they understand Hindi and they have quite a problem in understanding lectures in English. So this will be in Hindi and English mix. So आज हम start करेंगे special functions से. So basically we will cover functions like हम functions cover करेंगे gamma function, फिर gamma functions के कुछ properties देखेंगे, फिर beta function, फिर beta function की कुछ properties देखेंगे, then we will move on to Bessel function. I hope I am pronouncing it correctly. उसके बाद हम आएंगे error and complementary error function. तो इस वीडियो में हम error and complementary error function तक ही कवर करेंगे, and the remaining functions will be covered in another video, that is part 2 of this video. Okay, so let us start with gamma function. Let me just draw a line so that we utilize the page efficiently. Okay, so first one is gamma function. Okay, and also one thing, चूँकि ये वीडियोस मैं बेसिकली GTU स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, उनके लिए बना रहा हूँ, सो आई विल नॉट गो वेरी मच इन डेप्थ because much more depth is not required in GTU. You just need to know a few basic formulas and things. So okay, we carry on. So gamma function, so first of all let us see the definition. It is defined by the convergent improper integral gamma n is equal to integral 0 to infinity e to the power x, sorry, e to power minus x to the power n minus 1 dx for n greater than 0. So if in exam it is asked, so you have to write gamma function is defined by the convergent improper integral gamma n is equal to integral 0 to infinity e to power minus x to the power n minus 1 dx, where n is greater than 0. Now we come to properties of gamma function. So the first property is, it is also called reduction or recurrence formula. Reduction or recurrence formula. So the property is given by gamma of n plus 1 is equal to n gamma n greater than 0, since gamma function is defined for n greater than 0. So you have to keep in mind this property. Again, I'm not going into the proof of this property because
it is not required as we are studying for GTU. Now second property is gamma of n plus 1 is n factorial for n belonging to positive integers. सो जब भी मैं ये सिंबल यूज करूंगा, इसे हम एप्सिलॉन भी कहते हैं, तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू को डिनोट करता है, बिलोंग्स टू. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, एंड इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गामा ऑफ n plus 1 is equal to n into n minus 1 into n minus 2. ये आपको तब तक करते जाना है जब तक फैक्टर पॉजिटिव है. सो टिल फैक्टर इज पॉजिटिव. फैक्टर माने ये जो टर्म्स है. सो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ये तब तक करते जाना है टिल factor remains positive or factor is positive, and then you have to multiply this whole expression by gamma of last factor. Okay, so based on these properties हम कुछ examples देख लेते हैं. So here we do some examples. So first example is gamma 4. Now just look at the properties. We had done second property, that is gamma of n plus 1 is n factorial. So here n plus 1 is 4. So n plus 1 is 4. So implies n is equal to 3. And we had property gamma of n plus 1 is equal to n factorial. So we can write gamma 4 as 3 factorial. Now 3 factorial, as you know, is 3 into 2 into 1, that is 6. So by using properties, we can simply find the answers. Now second example, that is gamma of 13 by 4. Now I can write gamma of 13 by 4 is equal to gamma of 9 by 4 plus 1. You can verify 9 plus 4, 13 by 4. Okay. Now on this we apply property number 1, that is gamma of n plus 1 is n gamma n. So that will be equal to n. So 9 by 4 is n, gamma 9 by 4. Now again gamma 9 by 4 can be written as gamma of 5 by 4 plus 1. Okay, 9 by 4 can be written as 5 by 4 plus 1. Now again, on gamma 5 by 4 plus 1, I can apply property number 1. So that will be 9 by 4 into 5 by 4 into gamma 5 by 4. Now we can write 5 by 4 as 1 plus 1 by 4. So that will be 9 by 4 into 5 by 4 gamma 1 by 4 plus 1. Now again, on applying first property on this, we get 9 by 4 into 5 by 4 into 1 by 4 into gamma 1 by 4. Now simplifying this, we get 45 by 64 gamma 1 by 4. So while solving, first of all, let me give you some tips. जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो एक बार आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और उसको प्रॉपर्टी को नंबर दे दीजिए 1, एंड देन यू कैन राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स दैट बाय यूजिंग 1. अगेन यहाँ पे जहाँ पर भी यूज किया है बाय यूजिंग 1, and you have to solve this up to here.
अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि गामा 1/4 की वैल्यू ये है, देन फाइंड द आंसर, देन यू हैव टू फाइंड द आंसर. सो राइट नाउ वी आर सॉल्विंग टिल दिस पॉइंट. ओके, सो हमने 3 प्रॉपर्टीज कवर की. नाउ लेट अस मूव ऑन टू 4th प्रॉपर्टी. Again, let me draw a line. So 4th property is basically an extension or a special case of property number 2. So we'll find gamma function or value of gamma function for n is equal to 1. So gamma 1 पे हम प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करें. सो 1 को हम 0 + 1 लिख सकते हैं. So that will be 0 factorial. So gamma n + 1 is n factorial. So n + 1 is 0 + 1. So n is 0. So hence it is 0 factorial, and 0 factorial, as we all know, it is 1. If you don't know the value of 0 factorial, then just look it out. 0 factorial is 1. Now fifth property में हम गामा फंक्शन फॉर n = 0 को डिस्कस करेंगे. So now we have previously seen, हमने पहले देखा था कि we have gamma of n + 1 is n gamma n. So अगर हम n को यहाँ पर ले जाए तो हमारे पास गामा n की वैल्यू आएगी गामा ऑफ n + 1 by n. So when n tends to 0, we have gamma of 0 is equal to limit n tending to 0 gamma n + 1 by n. So basically limit n tending to 0. So जब n टेंड को 0 करेगा तो न्यूमरेटर गामा 1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय n. एंड गामा 1 की वैल्यू हमने अभी ही देखी थी, इट इज 1. सो लिमिट 1 by n tending to 0. So that is infinity. So hence we see that limit does not exist. Hence gamma 0 is undefined. Now we move on to 6th property. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गामा 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है. Now 6th property is gamma of n upon a to the power n is equal to integral 0 to infinity e to the power minus ax x to the power n minus 1 dx for e greater than 0 n greater than 0. तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है. अगेन मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, और वैसे देखा जाए तो सिंपल सा ही प्रूफ है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GTU एग्जाम द गोइंग इनटू सो मच डिटेल्स, इतनी डिटेल में जाना जरूरी नहीं है. सो गामा ऑफ n अपॉन a to the power n is integral 0 to infinity e to the power minus ax x to the power n minus 1 dx e greater than 0 n greater than 0. 7th property. So 7th property is basically a very important property of gamma function from which we derive the value of gamma 1/2, or it is at least one of the formula from which you can derive the value of gamma 1/2. So it is also called Euler's formula.
for gamma function. तो देखते हैं यूलर्स फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन. So it states that gamma into n into gamma of 1 minus n is equal to pi upon sin n pi for n less than 1 greater than 0. Okay. तो ये हमारा फॉर्मूला है. Now putting n is equal to 1 by 2 in this formula, we get n equal to 1 by 2, so gamma 1 by 2 into gamma 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2. So here it will be gamma 1 by 2 whole square is equal to pi upon sine n is 1 by 2, so pi by 2. Now as we all know, sine pi by 2 is 1, so this comes out to be pi. Hence gamma 1 by 2 is root of pi. So ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है. Now इसके मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी बता दी है, तो 7 प्रॉपर्टी का यूज हो ऐसा एक एग्जांपल कर देते हैं हम. So let me draw a line. So इसमें हमें बोला गया है गामा ऑफ 9 by 2 फाइंड करना है. So question is gamma of 9 by 2 you have to evaluate. So we can write gamma of 9 by 2 as gamma of 7 by 2 plus 1. Now by using the property gamma n plus 1 is n gamma n, this will become 7 by 2 gamma 7 by 2. Now 7 by 2 can be written as 5 by 2 plus 1. Again by using gamma n plus 1 property, we get 7 by 2 into 5 by 2 gamma of 5 by 2. Now that will be equal to 7 by 2 into 5 by 2 gamma. 5 by 2 can be written as 3 by 2 plus 1. Again by using the property of gamma of n plus 1, we get 7 by 2 into 5 by 2 into 3 by 2 gamma 3 by 2. Now 7 by 2 multiplied by 5 by 2 multiplied by 3 by 2, and 3 by 2 can be written as 1 by 2 plus 1. Again by applying gamma n plus 1 property, that is gamma n plus 1 is equal to n gamma n, it will be 7 by 2 into 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 gamma 1 by 2. Now here we know the gamma 1 by 2 value, which is root pi. So the answer is 7 into 5 into 3 into root pi divided by 2 into 2 into 2 into 2. So basically the answer will be 105 by 16 root pi. You can verify this. And based on एग्जाम में कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर पूछा है, तो रूट पाई की वैल्यू वहां तक राउंड ऑफ करके आप आंसर दे सकते हो मल्टीप्लाई करके. नाउ वी मूव ऑन टू बीटा फंक्शन. तो यहाँ तक गामा फंक्शन खत्म हो गया है. सो आई हैव कवर्ड एवरी प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू बीटा फंक्शन. सो सेकेंड फंक्शन है हमारे पास बीटा फंक्शन. नाउ अगेन इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल बीटा m comma n is equal to इंटीग्रल 0 to 1. नाउ रिमेंबर यहां पर इंटीग्रल 0 to 1 है. गामा फंक्शन में इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी था. x to the power m minus 1
into 1 minus x to the power n minus 1 dx for m greater than 0 and n greater than 0. Okay, so if in exam, if definition of gamma function is asked, so just write it down. Beta function. तो आपको लिखना है बीटा फंक्शन इज डिफाइंड बाय द कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल बीटा m, n is integral 0 to 1, keep it in mind, is 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x power n minus 1 dx for m greater than 0 n greater than 0. ये लिखना जरूरी है. Now we come to properties of beta function. So first property is symmetric property. इसे आप सिमेट्रिसिटी बोल सकते हो, सिमेट्री बोल सकते हो, या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं. सो द प्रॉपर्टी स्टेट दैट बीटा ऑफ m, n इज इक्वल टू बीटा ऑफ n, n. सी, ये प्रॉपर्टी आपको बीटा फंक्शन देखते ही पता चल जाएगी. अगर आप डेफिनेशन, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में n और m को इंटरचेंज करते हो तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनली. सो n और m को अगर मैं चेंज करूं सो मुझे मिलेगा इंटीग्रल 0 टू द पावर 1 x टू द पावर m की जगह पे n हो जाएगा n माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर की जगह टू पावर n माइनस 1 की जगह पर m माइनस 1 हो जाएगा एंड dx. Now we move on to second property, which is beta function in terms of trigonometric functions. So in terms of trigonometric functions, beta function can be written as follows. So beta mn trigonometric functions के फॉर्म में ये फॉर्मूला है 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा टू द पावर m माइनस 1, साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 एंड कॉस थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 डी थीटा. सो अगेन ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है. सो इफ you want to write beta function in terms of trigonometric functions, then this is the formula. Beta mn is 2 into integral 0 to pi by 2 sine to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 theta d theta. Now third is beta mn is equal to integral 0 to 1 x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx. सॉरी, एक मेरे से मिस्टेक हो गई. मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को इसमें mn रिप्लेस करके बताया था. सो उससे आपको सिमेट्रिसिटी नहीं दिखेगी. आप m और n को इस फॉर्मूला में रिप्लेस करके देखो तो आपके पास सेम एक्सप्रेशन आएगा. सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड. बीटा mn इज इंटीग्रल 0 टू द पावर 1 x टू द पावर m माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस n. तो अगर आप m और n को रिप्लेस करोगे तो ये x टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा और ये x टू द पावर m माइनस 1 हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा. तो अगेन ओवरऑल एक्सप्रेशन सेम रहा. सो हेंस सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी you can show it by using this formula.
जो प्रीवियसली मैंने बताया था इसमें m और n की वैल्यू रिप्लेस करके उससे हमें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, सो सॉरी अबाउट दैट. And now we come to fourth property, which is the relation between gamma and beta function. Again, let me draw a line. फोर्थ प्रॉपर्टी में हम गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में रिलेशनशिप क्या है. सो रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शंस. मुझे फंक्शंस लिखने का ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एम into gamma of n upon gamma of m plus n. So this is an important property or formula which is relationship between beta function and gamma function. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अगेन बीटा फंक्शन की मेजर प्रॉपर्टीज के मैं प्रूफ के अंदर नहीं गया हूँ, बिकॉज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GTU going into much depth is not required. Now we do some questions related to gamma function. The question is evaluate और इसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल 0 to the power pi by 2 sin square theta cos to the power 4 theta d theta. नाउ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म देख के कि इंटीग्रल 0 to pi by 2 है, साइन थीटा के पावर में कुछ है, कॉस थीटा के पावर में कुछ है, डी थीटा, तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि बीटा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज किया गया है. नाउ क्विकली चेक कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक. चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हम एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम नहीं देखेंगे. So beta mn is defined by 2 into sine to the power 2m minus 1 theta and cos to the power 2n minus 1 theta d theta. तो अभी हमें m और n की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला. सो फॉर्मूला इज बीटा m comma n is 2 into integral 0 to pi by 2 sine to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2n minus 1 d theta, sorry, cos to the power 2n minus 1 theta d theta. So now comparing both these expressions, we should find the values of m and n. So यहाँ पे साइन के पावर में 2m माइनस 1 है, यहाँ पर 2 है. सो ऑन इक्वेटिंग 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2, वी गेट m इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3 by 2. नाउ सिमिलरली cos थीटा की पावर में 2n माइनस 1 है, यहाँ पर 4 है, तो इक्वेटिंग 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 4. सो n इज इक्वल टू 5 by 2. नाउ देखिए, बेसिकली हमने क्या किया कि ये दोनों को कंपेयर करके m और n की वैल्यूज लाए. सो वी गॉट m इज इक्वल टू 3 by 2 एंड n इज इक्वल टू 5 by 2. नाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 by 2 इंटू 2 इंटू इंटीग्रल 0 to the pi by 2 साइन स्क्वायर थीटा cos to the power 4 theta d theta. तो ये बेसिकली हमने इवेल्युएट कर लिया था इसके लिए m और n की वैल्यू. सो हम लिख सकते हैं 1 by 2 इंटू बीटा m कॉमा n, दैट इज 1 by 2 इंटू बीटा 3 by 2 कॉमा
5/2। अब यहाँ से आगे हमें प्रोसीड कैसे करना है, बाय यूजिंग द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन विच इज रिलेशनशिप बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, दैट इज 1/2 इंटू गामा 3/2 इंटू गामा 5/2 upon gamma 3/2 plus 5/2, that is 8/2, that is nothing but 4. Now that will be equal to 1/2. अभी गामा 3/2 को मैं वो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, गामा n + 1 इज इक्वल टू n गामा n, लेकिन अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। सो 1/2 रूट पाई विल बी वैल्यू ऑफ गामा 3/2 एंड गामा 5/2 के लिए हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई, ओके। एंड डिवाइडेड बाय गामा 4 के लिए मैं वो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, गामा ऑफ n + 1 इज n फैक्टोरियल, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. So the answer to this will be 1/12 into 1/2 root pi into 3/2 into root pi by 2. So the answer will come out to be pi by 32. You can calculate. Now we move on to second question. Let me draw a line. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन यूज करना है. सो सेकेंड क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to pi/2 इंटीग्रल sin to the power 7 theta d theta. नाउ सजेस्ट यू कि आप वीडियो 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें. ओके, सो सॉल्विंग द क्वेश्चन अगेन, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन अगर उसके साथ इसे कंपेयर करें, सो रिमेंबर साइन के पावर में 2m-1 था और कॉस के पावर में 2n-1. तो यहाँ पर कॉस का कोई टर्म नहीं, इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा के पावर में 0 है, क्योंकि हमें पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. सो 2m-1 हमारे पास साइन का पावर था जो इसमें 7 है, तो m की वैल्यू आ जाती है 4 एंड कॉस के पावर में 0 है. एक मिनट मुझे लिख ही देने दीजिए. 0 to pi/2 sin to the power 7 theta cos to the power 0 theta d theta. यार इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी. 2n-1 is equal to 0, so n is equal to 1/2. So this expression can be written as 1/2 beta 4, 1/2. So that will be 1/2. Now applying the relationship between beta and gamma function property, we get gamma 4 multiplied by gamma 1/2 upon gamma 9/2. So I am not solving. The answer to this question comes out to be 16/35. The third is a very nice question. Third question is evaluate the integral 0 to pi/2 1/√ tan थीटा d थीटा. ये थोड़ा सा अगर आप देखो इसे तो अच्छा क्वेश्चन है, तो पॉज द वीडियो फॉर 3 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो कमिंग टू द सॉल्यूशन. तो आप tan थीटा देखकर घबरा जाओ कि हमने tan थीटा वाला तो कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं देखा बीटा फंक्शन का. तो लेट मी रिमाइंड यू, आप tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में लिख सकते हो. तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 to pi/2. tan थीटा को अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखूं और सबको न्यूमरेटर में लेकर जाऊं, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin to the power -1/2 थीटा
इंटू cos टू द पावर 1/2 थीटा डी थीटा। अब तो ये सिंपल प्रॉब्लम हो गया। सो सेम प्रोसीजर अप्लाई करके 2m-1 हमें -1/2 मिल गया, तो m हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 दैट इज 1/4 and 2n-1 is 1/2, so n will be 3/4। तो ये एक्सप्रेशन इवेल्यूएट, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास इवेल्यूएट हो जाए आ जाएगा 1/2 बीटा ऑफ 1/4 कॉमा 3/4। now applying the gamma relationship of beta with beta function, that is 1/2 gamma 1/4 into gamma 3/4 divided by गामा 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1, और गामा 1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। नाउ अभी यहां पर आप डायरेक्टली गामा की वैल्यू, इसे इंडिविजुअली मत कैलकुलेट करना। यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ी थी कि गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n इज नथिंग बट, ये याद कीजिए क्या था, गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n इज पाई अपॉन साइन n पाई। सो रादर देन ये इंडिविजुअली आप सॉल्व करो, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। सो द प्रॉपर्टी इज 1/2, यहाँ पर n हम 1/4 लेते हैं क्योंकि 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो दैट विल बी 1/2 पाई अपॉन साइन n पाई दैट इज π/4। अभी साइन π/4 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 है, सो द आंसर विल कम आउट टू बी π/√2। Okay, so we will stop the video here, and in the part 2 video okay, so sorry, we will discuss also, मैंने दो और फंक्शंस बोले थे डिस्कस करने के लिए, बेसल फंक्शन और एरर एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, वो भी एक डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल स्टॉप द वीडियो। So let me draw a line. So third function is Bessel function. I hope मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, वरना आप देख लेना। So I pronounce it Bessel function. I don't know whether the pronunciation is correct. So it is defined and denoted as Jnx. So basically Jnx is the Bessel function which is defined by the summation p is equal to 0 to infinity minus 1 to the power p x by 2 to the power n plus 2p divided by p factorial into gamma of n plus p plus 1। सो ये फंक्शन आपको याद रखना है, ये रेयरली पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया था कि व्हाट इज बेसल फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। सो Jnx इज समेशन p is equal to 0 to infinity minus 1 to the power p x by 2 to the power n plus 2p upon p factorial into gamma n plus p plus 1 which converges for x। So Bessel function is defined as and denoted by this summation which converges for x, जो summation converge हुआ। Now we come to properties of Bessel function। अगेन मैं प्रॉपर्टीज के प्रूफ और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आपको बस ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। सो फर्स्ट इज j ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 to the power n Jnx for n is equal to 1, 2, 3
and so on. Now second property is gn minus 1x plus gn plus 1x is equal to 2n upon x gnx. Okay, so gn minus 1x plus gn plus 1x is equal to 2n upon x gnx. Now इसका एक स्पेशल केस मैं बताता हूँ. For n is equal to 0, sorry, we go on to third property. और थर्ड प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस है. So third property states by d by dx of gnx, that is differentiation of gnx in terms of x is equal to gn minus 1x minus n upon x gnx. Okay, so differentiation of gnx in terms of x is gn minus 1x minus n upon x gnx. अभी इसका स्पेशल केस है कि फॉर n इस अगर n 0 रखो यहाँ पे, then d by dx of j0x is अभी n 0 रख दिया तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी. सो दैट विल बी j of minus 1x, बिकॉज n 0 रखेंगे सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी. नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ प्रॉपर्टी. That is d by dx of x to the power minus n gnx is equal to minus x to the power minus n gn plus 1x. So बेसल फंक्शन की इतनी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है. ये ज्यादा वैसे पूछा भी नहीं जाता, but still you should go through. Now we come to our fourth function, that is error and complementary error functions. So the error function is defined by the integral error of fx, error function of x is equal to 2 by root pi integral 0 to x e to the power minus t square dt, where t may be real or complex. t may be real or complex. तो ये एरर फंक्शन है. तो ये फंक्शन बेसिकली प्रोबेबिलिटी थियरी में बहुत यूज किया जाता है. उसके बाद हीट कंडक्शन थियरी और मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है. सो अगर एग्जाम में पूछा कि ये फंक्शन का यूज़ क्या होता है, सो जस्ट राइट इट डाउन. वन इज प्रोबेबिलिटी थियरी, हीट कंडक्शन थियरी, मैथमेटिकल फिजिक्स एक्सेट्रा. नाउ हम कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन देखते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल एरर एफ सी एक्स. तो देखो एरर फंक्शन में ई आर एफ था, यहाँ पे सी आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन. इट इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल 2 बाय रूट पाई इंटीग्रल एक्स टू इंफिनिटी. और इंटीग्रल के अंदर तो सेम चीज ही रहेगी. सो ये ध्यान में रखना, एरर एफ एक्स जो था उसमें इंटीग्रल 0 टू एक्स है, यहाँ पर एक्स टू इंफिनिटी है. नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ एरर एंड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन. So first property is, these are the properties of error and complementary error function. Error of f0 is equal to 0. Second property is error of f infinity is 2 by root pi integral 0 to infinity e to the power minus t square dt. So that will come out to be gamma of 1 by 2 upon root pi
So we know that gamma 1 by 2 is root pi and that is equal to 1. Now you might ask कि ये एक्सप्रेशन को आपने ये कैसे लिख दिया, तो वो बेसिकली एक डिटेल में जाना होगा जो जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है. स्टिल जस्ट लेट मी शो यू. ये एक्सप्रेशन में अगर हम टी स्क्वायर को एक्स मान लेते हैं, टी स्क्वायर को एक्स मान लेते हैं तो इम्प्लाइज कि एक्स है हमारे पास रूट टी. अब इसमें हमारे पास, अब इस एक्सप्रेशन में हम डिफ्रेंशिएशन करें तो टू टी डी टी हमारे पास आ जाता है डी एक्स. सो डी टी हमारे पास आ जाएगा है डी टी डी एक्स अपॉन डी टी इजक्वल टू डी एक्स अपॉन टू टी. अभी सॉरी यहाँ पर t इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो ये हमारे पास डी एक्स अपॉन टू टी दैट इज डी एक्स अपॉन टू रूट एक्स. अब हम t की जगह पे x सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 बाय रूट पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड dt की जगह पर हम रखेंगे dx अपॉन 2 रूट एक्स. अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, सिंस ये 2 कांस्टेंट हम बाहर ले जा सकते हैं इंटीग्रल में और कैंसिल आउट हो जाएगा वो. सो ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाता है, नेक्स्ट सेक्शन में लिखता हूँ 1 बाय रूट पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 है, तो माइनस 1 बाई 2 को मैं 1 बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ dx. अब ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट गामा 1 बाई 2, क्योंकि गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर x x टू द पावर n माइनस 1 dx. तो ये हो जाएगा गामा 1 बाई 2 अपॉन रूट पाई दैट इज 1. तो ये जो डिटेल में मैंने आपको समझाया वो नेसेसरी नहीं था जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से. Now we have discussed 1 and 2 property. Now we come to third property, which is error of Fcx is equal to 1 minus error of Fx. ये भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, स्टिल मैं बता देता हूँ. देखिए ये जिसको इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज पता होगी उसे ये दिख ही रहा होगा कि एरर ऑफ Fcx इज 1 माइनस एरर ऑफ Fx. Now see, हमारे पास एरर ऑफ Fx क्या था, एरर ऑफ Fcx इज इंटीग्रल 2 बाय रूट पाई इंटीग्रल x टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt. अभी ये इंटीग्रल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 बाय रूट पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt माइनस 2 बाय रूट पाई इंटीग्रल 0 टू x e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt. तो बेसिकली आप देख सकते हो x टू इन्फिनिटी इंटीग्रल जो था उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी एंड माइनस 0 टू x. तो 0 टू इन्फिनिटी में से माइनस 0 टू x की रेंज में अगर निकाल दूं तो मेरे पास x टू इन्फिनिटी होगा. ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, जिसको पता होगी ये प्रॉपर्टी उसको ये चीज दिखी गई होगी. तो now this can be written as 2 by root pi. So अभी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस, अच्छा ये जो टर्म है दैट इज नथिंग बट एरर ऑफ Fcx. दिस टर्म इज नथिंग बट एरर ऑफ Fcx. अभी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी दिस सेकेंड टर्म इज एरर ऑफ Fx. तो हमारे पास माइनस एरर ऑफ Fx टर्म आ गए. अभी 1, तो देखो हमने प्रीवियसली ही देखा था कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी कम्स आउट टू बी 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2. सो दिस विल बी 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 माइनस error of Fx.
So this comes down to be 1 minus error of fx. Okay, so we stop here. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हैवी साइड स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, पल्स यूनिट हाइट एंड ड्यूरेशन फंक्शन, साइनसोइडल फंक्शन, रेक्टेंगल फंक्शन, गेट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एंड वी विल लुक एट सम मोर फंक्शंस जो कि इतने इम्पोर्टेंस के नहीं है जितना गामा, बीटा फंक्शन, एरर फंक्शंस जो है, जो बेसल फंक्शन है, उतने इम्पोर्टेंस नहीं है. सो थैंक यू.